Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your computer class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your computer class. So students, in our previous session, we have started with the chapter that is chapter number 2, that is classification of computers. So this was the topic that we have started in our previous two sessions. Okay, and we have already covered some of the topics from chapter number 2. Okay, so the topic is classification of computers. So first of all we have done it, what is the meaning of classification. Classification का meaning क्या होता है. So classification means to categorize or to group the computers according to their ability, according to their performance, according to their purpose, according to their size. Okay, so that means grouping the computers. So computers को उनकी उनके size, shapes, परफॉर्मेंस, वर्क, पर्पस और सॉर्ट ऑफ जॉब, उसके बेसिस के ऊपर कैटेगराइज करना और ग्रुप में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. So this is, I'm just giving the recall so that you can recall all the things that we have already done in the previous two sessions of chapter number 2. Okay, after that we have done the classification of the computer as well. Okay, so we have classified the computers into on the two bases. The first is according to the purpose and according to the size. तो हमने computers को two bases के ऊपर बेटा classify किया था. The first is here, that is according to the purpose, and second is according to the size. Okay, so on these two bases we have classified the computer. So first one was according to the purpose. किस काम के लिए, किस purpose के लिए उसको use किया जाता है. For on the basis of that we have classified the computer. Second is according to the size. उसके size के ऊपर, depending upon the size of computer, we have classified the computer. So first is according to the purpose, computer was classified into the three parts, that is analog, digital and hybrid. तो ये तीनों parts, तीनों forms we have already discussed. So classification of computer on the basis of purpose we have already discussed, that is analog computer, digital computer and hybrid computer. Okay, so analog computers क्या थे, that the analog computers, they just give an approximate a result. Okay, so they don't give us the exact result, so they just give us an approximate result of anything. Okay, so that they don't give us the exact figure of anything. So here they have given the examples of various analog computers like thermometer, voltmeter, speedometer, fuel gauge, scale machines. So these all are the examples of analog computer. So second we have done, जो हमने पहले second किया था, that is digital computer. So this is the second topic that we had done. So digital computers क्या होते हैं? So digital computers, they give all the information in the figures. So mainly they work on the principle of binary digits, that is 0 and 1. तो इनके ऊपर जितनी भी information देते हैं, they work on the they represent their data or their output in the digits like 0 and 1. Okay, or you can say that they just give you an exact result. ये आपको exact result देते हैं of anything. Okay, so just like the digital watch, calculator, computer, microcomputer, so these all are the examples of digital computer. The third we had done was hybrid computers. Okay, this is the third form of a classification of computer according to the purpose, that is hybrid computer. So hybrid computers क्या होते हैं? The hybrid computers are the combination of analog and the digital computers. Hybrid computers क्या है? ये analog and digital computers का दोनों का, they are the कॉम्बिनेशन. तो उन दोनों को हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर्स को मिक्स करके इकट्ठा करके जो कंप्यूटर्स बनते हैं, दे आर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर्स. Okay, and as compared to the analog and as compared to the digital computer, the hybrid computers are more cost effective. Cost effective means उनके comparatively जो hybrid computers है, they are most relevant, उनसे ज़्यादा better हैं. Okay, the best example of hybrid computer is the this ECG machine that is used in the hospitals for reading the heartbeats of the patients. Okay, so it just give you the इसके अंदर जो data, the output आता है, that is come on the paper, that is in the form of the analog, and
but the heartbeat it shows, that is in the form of the that is a form of a digital computer. So that means that's why it is known as one of the best examples of hybrid computer. This is ECG machine. Okay, so next we have already started the second classification, that is according to the size. So हमने कंप्यूटर को according to the size भी classify किया था. So first we have done, that is the supercomputer. The supercomputer is the first classification and then the category according to the size. तो according to the size के तो सबसे पहला कंप्यूटर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, that is supercomputer. So as its name suggests that it is a supercomputer. तो जो इसके function है, जो इसका काम है, that also works like a super thing. जिसे हम सुपरमैन कहते हैं. So just like that, this computer is also a supercomputer because it is the biggest and the most powerful computer. Supercomputer is the most biggest and the powerful computer, though it is very big in size, and it is also very powerful. So this is the reason, that's why it is also very expensive. देखिए वो बड़ा है, powerful है, so generally it will be more expensive, because as compared to the normal computers that we are using in our homes. ओके, जो नॉर्मल कंप्यूटर हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली दीज सुपर कंप्यूटर्स वर्क मोर फास्टर, वर्क्स मोर एक्यूरेटली, मोर रिलायबली. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज दी सुपर कंप्यूटर. ओके, इनका साइज है, दे आर क्वाइट बिग इन साइज. ओके, एंड ये हम वी कांट फाइंड दीज कंप्यूटर्स इन द नॉर्मल होम्स. ओके, स्पेशली ये जो सुपर कंप्यूटर्स है बेटा, दे आर स्पेशली बिल्ट फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशंस. तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऑन द in that organizations, these super computers are used. Okay, so the best example is like that these supercomputers are used in the for the weather forecasting department. It is also used by the nuclear power stations, military stations, research laboratories. जो laboratories है, research work है. Okay, तो यहाँ जो military stations है, वहाँ सब पे they all of these organization, they use these supercomputers to do their work, to store their work, to protect their work. Okay, so, and the speed of this computer is that it can perform near about trillions of instructions in 1 second. So that means it trillions, 1 trillion, ये trillions of that billion से भी ज़्यादा. Okay, so ये 1 second के अंदर trillions of instruction it can perform. So that's why it is known as the supercomputer. So up to here we have already done in our previous two session. So today this was just a recall that I have given. So now I'm going to tell you about the second form of second type of computer under the category, that is classification of computer according to the size. So computer का classification उनके size के according हम बात कर रहे हैं. Okay, so this is the computer that we will talk about. This is the second form जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. That is mainframe computer. So now I'm talking about the mainframe computer. Now what is this mainframe computer? So let's read about the description of mainframe computer. So mainframe is also a large and powerful computer, but it is less powerful than a supercomputer. It is also an expensive. Okay, you can see the cursor. मेरे cursor के साथ साथ read करिए. It is also an expensive computer. Mainframe has capacity to host multiple operating systems. Mainframe computers was first developed by IBM. Okay, so देखिए, this is the description about the mainframe computer is given, that mainframe computer is also mainframe is also a large and powerful computer, but it is less powerful than a super computer. देखिए, जो जैसे सुपर कंप्यूटर की हमने बात की थी, वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, वो बड़े कंप्यूटर हैं. तो वैसे ही दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, ये भी बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल है. ओके, जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर, बस बट उसके कंपैरेटिवली दिस इज लिटिल बिट लेस. This is also very powerful, this is also very large, but this is comparatively less. Okay, ये भी the mainframe computers है, they are also large in size, they are also very powerful computer. But if we compare these two computers, super computer and mainframe computer, that is not
the supercomputer is better. So this mainframe computer, okay, so they are also very large in size, ये भी size में बड़े होते हैं, and they are also very powerful, but it is less powerful than a supercomputer. But if we compare the mainframe computer and the supercomputer, जब हम mainframe computer और supercomputer को compare करेंगे, so supercomputer is more powerful. Okay, so this the mainframe is also good, but as come if we compare it with supercomputer, that is less powerful. Okay, next is it is also an expensive computer. Okay, so just like supercomputer, this mainframe computer is quite very expensive. तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था that सुपर कंप्यूटर वर्क्स इज वेरी पावरफुल, इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज, तो ये बहुत बड़ा है सुपर कंप्यूटर, बहुत लार्ज है, सो जनरली इट विल बी वेरी costly. So this mainframe computer, this is also very expensive, just like a supercomputer. Mainframe has a capacity to host multiple operating system. Mainframe computers was first developed by IBM. तो देखिए the most important thing or the most important feature of the mainframe computer is this, कि जो mainframe computer है it can host multiple operating system at a time. तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर बेटा वो एक टाइम पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को होस्ट कर सकता है. ओके, सो मेन फ्रेम कंप्यूटर इट कैन होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मल्टीपल मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही टाइम पे होस्ट कर सकता है. सो दैट ओके, नेक्स्ट इन मेन फ्रेम कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द IBM. सो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था दैट वाज डेवलप्ड बाय द IBM. ओके, सो IBM इज आल्सो वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल कंपनीज. ओके, सो देखिए हम अपने पिछले चैप्टर से पढ़ते जा रहे हैं आई अबाउट द IBM. सो हरमन हॉलरेथ इज द ही हैज स्टार्टेड दिस, ही इज द फाउंडर ऑफ IBM. ओके, उन्होंने ही शुरू की थी. And now this IBM is one of the leading in IT company in the world. Okay, IBM की full form है International Business Machine. Okay, so this is the picture you can see here. This is the picture of mainframe computer. Okay, so that I have highlighted. जो मैंने highlight किया, this is the picture of mainframe computer. ये mainframe computer की picture है. Clear? Next, this was the description. Moving next to the size. So let's talk about the size of the mainframe computer. So it is large, normally the size of a closet. So देखिए this mainframe computer, this is quite very large, just like the size of a closet. Closet means wardrobe, almirah. Okay, so wardrobe, almirahs होती हैं जो, they are known as the closet. So this mainframe computer, they are large in size. Okay, just like the size of a closet, just like the size of a almirah. Okay, so it is large in size. Next is location. It is mostly found in large business houses or government centers. So where they locate? So जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं बेटा, दे आर जस्ट लाइक, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स का मैंने आपको बताया था, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दे आर ऑल्सो यूज इन द लार्ज बिजनेस हाउसेज एंड द गवर्नमेंट सेंटर्स. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी क्या है, वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसेस इंडस्ट्रीज हैं या बिजनेस companies हैं, वहाँ पे these main computers are being used, mainframe computers are being used, and they are also used in the government centers. और इनको government centers में भी यूज किया था. गवर्नमेंट सेंटर्स मीन जो कि जो गवर्नमेंट कंपनी हो या जहाँ पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट की जितने भी वर्क जो गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं. Okay, so on those and those places, at those places this mainframe computer is used. So this is mainly used in the large business houses as well as in the government centers. Okay, next is speed. It can process up to millions of instructions per second. So now we are talking about the speed of the mainframe computer. सो द स्पीड here, जैसे कि हमने सुपर कंप्यूटर की बात की थी बेटा, इसमें भी just like the supercomputer, this mainframe computers can also process
सॉरी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, तो ये भी मिलियंस, जैसे कि देखिए सुपर कंप्यूटर में हमने बात की थी कि वो एक सेकेंड्स में इट कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो और जो सुपर कंप्यूटर है वो एक सेकेंड में ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकता था, बट दिस कैन परफॉर्म ओनली मिलियंस। तो देखिए मिलियंस भी कम नहीं है, बट एज कम इफ वी कंपेयर इट विद द सुपर कंप्यूटर दैट इज क्वाइट लेस। Okay, so this is the speed of the mainframe computer, so that it can perform millions of instructions per second. Next is the uses. So what is the uses of these computer? That is the mainframe computer. So let's talk about its uses. It is mostly used for scientific research and doing bulk mathematical operations. ओके, सो व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर? देखिए ज्यादातर ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं दे आर जनरली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। ओके, सो साइंटिफिक रिसर्च का कोई भी काम होता है दैट इज डन ऑन दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा बहुत सारी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑपरेशंस, देखिए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही फोर, इसके अलावा देखिए आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसमें कि जो साइंटिस्ट है दे जस्ट राइट ऑन देयर राइट नोट डाउन, जो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं कि नोट डाउन करते हैं। तो कुछ वो न्यूमेरिक टर्म्स में होती हैं, सम आर इन द अल्फाबेटिकल, सम आर इन द कोड्स। ओके, सो वैसे ही बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज रिटन इन द कोड्स। तो उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने के लिए, ओके, सो दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड इन द बिग बिजनेस हाउसेज जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द बैलेंस शीट। ओके, एक सबसे बड़ी कंपनी अगर हम बात करें अंबानी ग्रुप, सॉरी रिलायंस ग्रुप की, सो रिलायंस ग्रुप के लिए तो वो देखिए उनके यहाँ पे क्या होगा, दे मस्ट बी हैविंग द सुपर कंप्यूटर्स फॉर डूइंग सो मच, बिकॉज देखिए वो उन्होंने बहुत सारे फील्ड में दे हैव पुट देयर हैंड्स इन डिफरेंट फील्ड्स, उनके अलग अलग फील्ड्स में उनका हाथ है। जैसे नाउ डेज यू कैन सी द आईपीएल, ओके, द मुंबई इंडियंस इज वन ऑफ द franchisee of this uh, Ambani's. Okay, next इसके अलावा there is Reliance communication is there. Other than sorry, Reliance is not the communication, now Jio communication is there. Reliance पेट्रोल पंप्स आर देयर, रिलायंस फ्रेश इज देयर। तो देखिए इतने इतने अलग अलग बिजनेस चीजों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो वो इन सब की कैलकुलेशन, वो इन सब का हिसाब किताब कैसे रखते हैं। ओके, सो फॉर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ all those things they just they have mainframe computers, so that is they basically use it for the scientific research and for doing the bulk mathematical operations. So that is mainframe कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम क्या है, ओके, दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो वेरी बिग। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की तरह भी बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बट इफ वी कंपेयर दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर विद द सुपर कंप्यूटर तो उसकी कंपैटिबिलिटी इज क्वाइट लेस पावरफुल। नेक्स्ट इज, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, और ये एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को होस्ट कर सकता है। This is one of the main feature or main merit of this mainframe computer. And सबसे पहला mainframe computer किसने invent किया था? So the first mainframe computer was developed by the IBM, that is International Business Machine. Okay, so just like super computer, ये mainframe computer का size है that is also very big. Okay, जो कि closet की तरह, closet means wardrobe, अलमीरा जो बड़ी होती है उसको closet बोलते हैं। ओके, सो ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन लार्ज बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे दीज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली फाउंड। ओके, एंड इट द स्पीड इज क्वाइट वेरी फास्ट, सो इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। एक मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में ये परफॉर्म कर सकता है। लास्ट इज इट इज what are its uses? तो इसके use क्या है? So these mainframe computers are basically used in the scientific research and for doing the mathematical operations. So this is mainframe computer. Okay, so this is the second form or the second type or second classification of computers according to their size. So the next is the third classification of computer according to their size is mini computer. Now we will talk about the next computer, that is mini
कंप्यूटर। तो देखिए नाम इसका नाम ही क्या है, मिनी। मिनी मीन्स छोटा, मिनी कंप्यूटर। So let's read about the mini computer. So mini computer क्या है? The description is given here. It is a multi-user computer that has lesser memory and storage than mainframe. Mini computers are also called workstations. A number of terminals can be connected to it in a network. ओके, सो डिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए दोनों ने क्या बोला, मिनी इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर दैट हैज लेसर मेमोरी एंड स्टोरेज देन mini mainframe. So now here we are comparing it with the mainframe computer. देखिए ना, अब इसको mainframe computer से compare कर रहे हैं हम। पहले जो हमारा mainframe था उसको हमने सुपर कंप्यूटर से compare किया था। So that means we are मूविंग फ्रॉम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले हमने सुपर कंप्यूटर की बात की जो कि सबसे बड़ा कंप्यूटर था, उसके बाद उससे छोटे नेक्स्ट की बात की, दैट इज मेन फ्रेम। नाउ मेन फ्रेम के बाद उससे भी छोटा है, दैट इज मिनी कंप्यूटर। तो देखिए दिस इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर। सो मल्टी यूजर कंप्यूटर मीन्स कि इसको कई लोग जो है कि दे कैन ऑपरेट दिस। ओके, सो दिस इज द मल्टी यूजर। मल्टी मल्टी मीन्स बहुत सारे यूजर्स, दे कैन ऑपरेट दिस मिनी कंप्यूटर। ओके, एंड इफ वी कंपेयर इट विद द मेन फ्रेम, अगर हम इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं, सो एज कंपेयर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर इट हैज लेस मेमोरी एंड स्टोरेज एज वेल। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरेटिवली इसकी मेमोरी भी लेस है और स्टोरेज भी ऑल्सो लेस, स्टोरेज ऑल्सो लेस। Next is mini computers are also called workstations. So this is the other name of mini computers. So the mini computers, they are also known as the workstations. Next, a number of terminals can be connected to it in a network. Is okay. So mini computer में क्या है, अब ढेर सारे जो networks हैं, you can connect to this mini computer. Okay, so this mini computers, this is a multi-user computer. So number of users they can use this. Okay, and but when we compare it with the mainframe computer, so it has less memory and less storage capacity than the mainframe. तो mainframe computer के comparatively इसकी less memory भी है and less storage capacity भी all. Okay, so this mini computers, they are also known as the workstations. Okay, and you can connect this mini computers to the different networks at a time. Okay, so this was the description about the mini computer. Next, let's talk about its size. So now we will talk about the size of the mini computer. So what is the size here? A mid-sized computer usually fitted within a cabinet and about the size of a refrigerator. So now we are talking about the size of the mini computer. देखिए ये एक मिड साइज मींस एक मीडियम साइज का। सो दिस मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर एंड इट कैन यूजुअली फिटेड with a cabinet. Okay, और इसको एक कैबिनेट के अंदर it can usually fit to a cabinet. Actually not okay, so this mini computers, these are specially ये जो mainly है ये जो एक कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड होते हैं। Okay, so these are they are middle size computers and they are basically fitted to a cabinet and is about the size of refrigerator, and now they have given the example for this size कि इसका size एक refrigerator like a fridge. So these mini computers, they are of the size of a fridge. तो एक fridge की refrigerator की size के होते हैं. So you can say, so they are quite smaller than the mainframe computer. Okay, so you can see the picture of this mini computer here. So I have highlighted the picture of the mini computer. Okay, so this is the picture of mini computer. So you can see its size is quite smaller than the mainframe computer. Okay, and other thing about it is this mini computer, they are fitted in a cabinet. Okay, cabinet के अंदर fitted होते हैं and their size is about like a refrigerator. Next, let's talk about its location. So now we will talk about the location of the mini computers. So mini computer is most likely to be found in universities, polytechnics and the industries. ओके, सो नाउ देखिए जैसे जैसे हम कंप्यूटर के साइज की जो बात करें वो कम होता जा रहा है, वैसे वैसे जो इसकी यूटिलाइजेशन है या और वेयर दे आर बीइंग यूज्ड और वेयर दे आर लोकेटेड, दैट इज आल्सो कमिंग डाउनवर्ड। सो देखिए सबसे पहले तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते थे सुपर कंप्यूटर्स, देन वी वर टॉकिंग अबाउट द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, तो वो कम बिजनेस हाउसेज में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में यूज होते थे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनी कंप्यूटर।
So these mainly computers, they are most used in the universities. Okay, universities, okay, जिसको महाविद्यालय हम बोलते हैं. So these mini computers, ये universities में use होती हैं, polytechnics में and industries में. Polytechnics जो colleges होते हैं, okay, so these mini computers, they are basically used in the big institution, educational institutions. तो ये बड़े बड़े जो educational institutions में use होती है, जैसे कि universities होगी, because they have to keep the data of a very on a large scale. तो देखिए बहुत सारी universities से अलग अलग colleges जो हैं, they are affiliated. ओके, हर कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है, और एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस जो एफिलिएशन होती है उनकी. ओके, सो these universities, they need to keep the data of all the students that are studying under their university in different colleges. तो इन universities को इनकी university के अंदर जो अलग अलग colleges में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका data उनको store करना है, all the various teachers, faculty and other operations that are going there, so they have to keep the data of that. So they can't keep those data. Some data is confidential as well, so they need to keep this all this great data. Okay, so for that they are using this mini computers. Other than that, these mini computers are also used in the polytechnics and the industries as well. So industries जो हैं, they also use these mini computer to store their data, to store their information. Okay, so these are mini computers. Next, let's talk about the speed. So now we will talk about the speed of the mini computer. So let's hear it. It can do the same work as a mainframe computer would do, but at a lower speed. Okay, so देखिए, here they have given an example कि ये जो this also works, it can work same as a mainframe computer. तो ये mainframe computer की ही तरह it can work, it can do all the work, but the speed will be less as compare if we compare it with the mainframe computer. Okay, देखिए, अब इसको मिनी कंप्यूटर, द रीजन बिहाइंड इट इज, इसको मिनी कंप्यूटर क्यों कहा जाता है कि दैट इट कैन परफॉर्म ऑल द टास्क दैट अ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन परफॉर्म. सो दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये भी एक मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकती है, बट it will work at a low speed or less speed if we compare it with the mainframe computer. अगर हम इसको mainframe computer से के साथ इसको compare करेंगे, so as compared to that, it will work at a lower speed. Okay, so it can do same work as mainframe computer. So that means these mini computers, they can perform all the functions that that the mainframe computer can perform, but the speed will be less. Okay, so this is the difference between the speed of these two computers are quite different. Okay, so that's why it is categorized in the lower category than the mainframe. Last is the uses. So let's talk about the uses. It is mostly used by the big organizations like banks. जो बड़े बड़े banks होते हैं, okay? So banks होते हैं, they use these mini computers. So this mini computer is mainly used by the big organization like bank. तो banks वगैरह में भी, okay, तो banks हैं, they also need to keep the data of all the account holders, okay, the debtors, जो account holders हैं उनके बैंक में, so they need to keep the data. And you know, जो the बैंक के पास जो information होती है, that is quite very confidential, सबसे confidential information होती है, that we should not share with anyone. So for this they need this computer, so to keep such great confidential information, okay, confidential information को रखने के लिए, so they also need some database, so where they can store all the data. So they use these mini computers to keep their data stored about all the account holders of their bank. So this is mini computer. So today we have talked about these two computers, that is mainframe computer and the mini computer. Okay, so this is the mainframe. So next is the microcomputer and the desktop computer notebook. So rest some are also left, so that we will discuss in the next session. Okay, so these two computers, that is the mainframe and mini computers, okay, these are the under the category. अब देखिए हमने अब तक अगर हम अपने फ्लो चार्ट की बात करें, so according to it, so there are, according, as you can see my cursor, according to the size, the computers are divided into 5: supercomputer, mainframe, mini, micro and the mobile devices.
So supercomputer we have done, mainframe computer we have done, mini computer we have done. So in the yesterday's next session, we will start with the microcomputer. Okay, so just revise whatever is here. So just revise this supercomputer, mainframe computer and मिनी कंप्यूटर. तो इन दोनों का तीनों का डिफरेंस लेके बेटा आप याद करोगे, समझोगे, then it will be easy for you to learn the difference between these three. Okay, so this was my today's session. So with this I'm just ending the today's session here only. So just stay at home, stay safe and have a great day.